Chronicle of a Death Foretold by Gabriel Garcia Marquez, published in 1981. Welcome to the channel Father 007. I'm Adnan Ayaz, and we have a novel today for further themes and different things that are related to it. First, we would know कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो डिस्कस की गई हैं, उनको देख लेते हैं और फिर मज़ीद हम चलेंगे इनकी थीम्स वगैरह की तरफ. ठीक है, इसमें आप पॉलिटिकल सटायर ऑन सोशल इंस्टीट्यूशंस, उसमें फिर इसके बाद है डिके एंड करप्शन इन द पोस्ट सिविल वॉर कोलंबिया, breakdown of narrative and authoritative or authority through the multiple perspectives to point out that all fact is relative. उसके बाद हमारे पास है the ones with a single idea become one-dimensional zombies like the Kari brothers. Then an Arab foreigner accused of raping a native Spanish and nailed to the wall. Then उसके बाद the collective manipulation of the truth by a town's small community obsessed with public honor and social ethics. फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास में है जो हम देखते हैं इसमें वो है prejudice and the gossip invent the evil for the Turk. आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं इस नॉवल के अंदर जो कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी. इसमें फ्रेगमेंटेशन ऑफ टाइम, इसमें क्या क्या आता है. फ्रेगमेंटेड टाइमलाइन जो है फ्रेगमेंटेड, उसमें पता नहीं क्या बात हुई, कभी फ्यूचर की, कभी पास्ट की, कभी प्रेजेंट की. इट्स जस्ट समथिंग स्विचिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. Where community is locked in the past traditions की बात हो रही है, past के बारे में बात हो रही है. Unknown shadow narrator, breakdown of the narrative authority. तो जो narrator है, it's a shadowy narrator. No one knows properly who he is and how he is going to address. There is an ambiguity. Trying to discover the truth after 27 years. 27 साल बाद जब ट्रूथ डिस्कवर करने की कोशिश की जा रही है. मल्टीपल वॉइसेस, मल्टीपल ट्रूथ. कोई एक बात नहीं, कोई एक सच्चाई बयान नहीं हो रही, बल्कि डिफरेंट चीज़ें जो सब कुछ सच बताया जा रहा है. Instead of exposition, there are concealments. कोई चीज़ एक्सपोज नहीं की जा रही उसमें, बल्कि उसमें चीज़ों को छुपाया जा रहा है. There are concealments in there. We can only know the surface of reality, not the ground reality. ठीक है, आगे चलते हैं. इसमें कहते हैं shared responsibility. Santiago Nasser annoys the two servants women by his playboy antics. ठीक है, वो जो उसकी आदतें थी playboy टाइप की, जिससे वो टू मेड्स को जो है वो उनको क्या करता था, थोड़ा सा तंग करता था. दैट्स व्हाट वी कॉल. उसके बाद उसकी मदर है प्लासिडा लाइनेरो. रॉन्ग इंटरप्रिटेशन उन्होंने की ऑफ ड्रीम्स, क्लोजिंग ऑफ द डोर, जो एंड टाइम में दरवाज़ा बंद कर दी जब उसको अंदर आना था. when he was being killed, तो उनकी अम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया. she didn't know that he was outside. Victoria Guzman grudge against the Nasser family. Ibrahim Nasser is still influencing. उसके बाप के जो करतूत थे वो उसके फैमिली पे जो आ रहे थे, उसके बेटे को सफ़र करने पड़े थे. डिवेना फ्लोरा है misinforms the mother of Santiago. उसको पता नहीं है कि बेटा जो सेंटियागो नसर जो है वो अंदर है भी नहीं, बस वो कहती है कि हाँ वो यही था, मैंने उसको ऊपर जाते हुए देखा है. फिर बियाट्रो सैन रोमन जो है starts a cycle by returning the bride. जो है ब्राइड को वो क्या करता है, वापस भेज देता है. इसकी वजह से साइकिल शुरू हो जाता है. फिर Cristo Bedoya fails to find Santiago at the last minute. उसको सेंटियागो मिलता नहीं जब उसको ढूंढना होता है, उसको ढूंढ रहा होता है. Louis Enrique lets drunkenness overtake his consciousness. बेहोश पड़ा होता है, उसको पता ही नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना. उसके नरेटर है returns to the brothel. वो brothel में जाके enjoy कर रहा होता है. ठीक है, तो ये shared responsibility. आगे हमारे पास है shared responsibility दोबारा से है. अब इसमें क्या है, Father Amador जो है too busy with the bishop's visit conducts autopsy. दोबारा से autopsy जो कंडक्ट करता है वो उसकी बॉडी का जो है असर कर देता है और बहुत बिजी है, बिशप का वेट कर रहा है उसके विजिट के लिए. कर्नल Lazaro Aponte finds Domino's match dates as more important than saving the life. जब उसकी लाइफ बचाने की बजाय वो डोमिनोज के मैच वगैरह जो हो रहे होते हैं उनकी डेट्स वगैरह देख रहा होता है, वो वहाँ चला जाता है. Then Prudentia Coates believes in revenge for honor. उसको जो है उसको बदला चाहिए होता है और अपनी इज्जत, जो उसकी इज्जत पाने के लिए उसको बदला चाहिए होता है. Bishop does not get off the board. वो अपनी बोर्ड से उतरता ही नहीं है बिशप.
फ्लोरा मिगुआ does not trust Santiago. वो जो है ट्रस्ट नहीं करती अपने मंगेतर पर. Too self-absorbed to care about, to care for Santiago's life. Santiago की जो life उसके बारे में उसको परवाह नहीं है, बस अपने ही उसी ग़म में डूबी हुई है. फिर Nahir Miguel does not insist enough to make Santiago stay in his house or take his rifle. वो इससे ज़्यादा उसको बोलता नहीं है, insist नहीं करता है तुम घर पे हो, तुम्हारी लाइफ खतरे में है, और take a rifle to save yourself. Nothing. ऐसा कुछ करता नहीं. आगे चलते हैं. Shared victimhood. ठीक है. अब ये जो victim है, victimization है, वो shared है. कैसे विकारी brothers do not want to kill but they have to. वो मारना नहीं चाहते थे but they went to everyone. लेकिन उन्होंने कहा किसी ने उसको मना नहीं किया, उनको stop नहीं किया. Angela Vicario has to name someone. उसको किसी ना किसी का नाम लेना था, उसने नाम ले दिया. Piora Vicario has to protect the family. उसको अपनी family को बचाना था. Beato St. Roman has to return the bride for honor. उसको अपने से बचाने के लिए अपनी जो उसकी ब्राइड दुल्हन थी उसको वापस करना था. इज ही द प्राइम विक्टिम. क्या वो वाकई में विक्टिम है, शिकार है. फादर एमेटोर जो है वो टेक केयर ऑफ द बिशप्स रिसेप्शन. वो जो है बिशप जो है उसके रिसेप्शन के लिए जो है वो उसमें बिजी है, उसी का ख्याल रख रहा है. द मेयर कैजुअल अप्रोच इज हिज स्टाइल. वो जो अपना ही उसका स्टाइल है, हमेशा कैजुअल रहता है. नथिंग टू वरी अबाउट. द डॉन रोगलियो डी ला फ्लोर ये जो है वो क्या करता है, डज नॉट बिलीव इन द विकारियोस एबिलिटी. को यकीन नहीं आता कि वो उनको मार भी सकते हैं. वो जो विकारियो ब्रदर्स हैं वो किसी का कत्ल कर देंगे, खास तौर पर सेंटियागो नसर. फिर द होल टाउन एज दे कैन नॉट फॉरगेट द इवेंट एंड रिमेन फर्दर लॉक्ड इन द पास्ट. पूरा जो पूरा टाउन है वो क्या है, दे रिमेन इन द पास्ट, और वो भूल भी नहीं पा रहे इस चीज़ को. ठीक है. तो ये शेयर्ड विक्टिमहुड है, यानी कि सबका इसमें खुसूस शामिल है. फिर इसमें एम्बिग्यूटीज़ हैं इसमें के अंदर बहुत सारी, कि यार किसने किया, कौन था. क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा. हु इज़ अ रियल आउटसाइडर, द अदर, और who becomes the outsider, who is the prime victim, who is the answer to the central mystery, whose name is Angela hiding. वो जो है किसका नाम छुपा रही है. Why do the spoken words, the accusation has so much power? Why is Beato 2 hours late for his wedding? Why was Santiago's wedding postponed several times? Why does Santiago not leave the house of Miguel's in spite of their advice to stay? Why doesn't Nahir insist on his staying there? Why does the doctor Dionysii Igoron leave the town, or town से पूछा गया था. Why is Piora Vicari a saint as said by Beato? Why does the bishop hate this town? Is the bishop right in hating this town? Why do Arabs not revenge the murder of Santiago instead of staying there and helping them? ठीक है. फिर इसमें ironies है बहुत सारी. इसमें mother is unable to interpret the omens to save her son, even though she has the reputation of having this magical power. ठीक है. वो magical power होती है कि वो बहुत सारी चीज़ें बता देती है, and जो चीज़ें आने वाली होती हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकती है, लेकिन क्यों नहीं बता पाती. The spoken words the accusation have much greater power than the truth. The truth से ज़्यादा जो accusation इल्ज़ाम ज़्यादा जो है वो ग्रेटर है, ज़्यादा पावरफुल है. एंजेला विकारियो कैन नॉट फेन वर्जिनिटी. ठीक है, अपनी वर्जिनिटी को फेन नहीं कर सकती थी. पीपल make it a spectacle and he is confused because of the people's noise in the crowd. वो लोग जो शोर मचा रहे होते हैं, he's confused about it. His use of the front door, सामने वाले दरवाजे से क्यों बाहर करता है, पीछे वाला क्यों नहीं यूज़ किया. The mother closed the door at the last moment. ये हमने पहले भी बात एंड टाइम पे वो दरवाज़ा बंद कर दी, उसका उसको पता ही नहीं है. Santiago does not see the note slipped inside. एक नोट जो नीचे स्लिप किया जाता है वो नहीं देख पाता. Military service gives Pedro Vicario the disease. How could a military do such a thing, which is full of fitness and health? ठीक है. An Arab woman cures the diseases of Vicario brothers. Angela Vicario is reborn with love and responsibility. उसके बाद responsible और बहुत love, caring and loving हो जाती है after the death of Santiago in his heart. The community's love for the tradition and for the past. The central, paternal, authoritative rule is associated with the authority of the past. The mythic past of some religious or moral order.
isolates from reality those fixated upon an illusory past. The narrators search through the flooded offices for the evidence like a search through the lagoon of lost causes is as absurd as a crime of murder itself. ठीक है? The father figure once the focal point of honor, power, and truth becomes inadequate. ठीक है? Father figure पे एक सवाल उठाया जाता है. Is a questionable thing. Marcus deflates the lofty position of the father figure in the carnival. ठीक है? Carnival में करता है. उसके बाद the father figures. Ibrahim Nasser is going to destroy the statue of a saint. His part in the murder. ठीक है. फिर Poncio Vicario is sitting uselessly on a stool. Blind father watching over daughter's honor. General Petronio sent Roman military authority is undercut with dust on his medal. Pedro also reflects this diminution. Narrator's father acts like child and plays violin in the carnivals of the wedding. Nahimigo cannot stop Santiago and causes the ruin of his daughter. जिसकी daughter जो बाद में तबाह हो जाती है, कुछ नहीं बचता उसका. So the bishop, his blessing is a fleeting illusion. Mayor Colonel Lazaro Ponte shirks his responsibility. Father Amador Vicario's claim of innocence in the church. He can only save his soul. The judge, more interested in fantasy, the authority of law is also undercut. And then we have love and marriage. Love and marriage के बारे में बताया गया. Santiago Nasser and Flora Mico, Santiago Nasser and the prostitute, Beatrice San Roman and Angela Vicario, Pablo Vicario and Prudencia Coates, Ibrahim Nasser and Placidia Linaro, then Poncio and Piora Vicario, then Zeus and his dead wife. ये सारी जो है love and marriage की इसमें जो है बातें चल रही हैं, सारे couples वगैरह हैं जो कि या तो love करते हैं, marriage इनकी हो चुकी है इस तरह से. Then love, the pursuit of love is like falconry. A falcon who chases a wall-like crane can only hope for a life of pain. Notes: Santiago Nasser practiced falconry. उसने falconry practice किया. What did he get? Nothing but pain and death. Love can be learned too. कि प्यार भी सीखा जा सकता है. Magical realism इसमें मिलती है आपको. Dreams and interpretations and fear of the person about to die. Blindness of gold, wealth जो है उसको they are looking for wealth or gold जिसको represent कर रहा है. People's blindness towards his entry into Miguel house. Smell of Santiago Nasser. उसकी town में पूरी smell उसको feel होती है सब लोगों को. Flooded offices में भरे होते हैं. And then we have animal imageries में भी दिखाई गई है कि birds हैं, pigs हैं, dogs हैं, butterfly हैं, roosters हैं. And symbolism है of names को भी symbolize किया गया इसमें. Angela का name है, Piora है, Ibrahim Nasser है, Santiago Nasser है, and Victoria है, Diviana Flor है, Poncho है. They are actually symbolism. They are symbolizing something. Their names symbolize. उसके बाद antisemitism है. Placida's Lenorio grievances against her husband. Angela's accusation. The servants' hatred for the Nassars, calling him Turk. The town's passivity in stopping the murder. Vicario's brother, acquittal in spite of the fact that the judge does not find any evidence as to Santiago's being the perpetrator. So there are different things here that are discussed here. And then we have themes here. Themes में हमारे पास honor है, revenge है, sex roles हैं इसमें. How the people are having roles in this one. And deceptions and supernatural dreams, hallucinations and premonitions. And that's something that is very useful. And that's it. If you guys really found it useful, do hit a like and comment on it. Have a wonderful, wonderful day.